हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय टेक विद हसन यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो हमारे टेक वीडियो का टॉपिक है वो इस हवाले से कि आज की वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ एथिकल कंसिडरेशन के रिलेटेड कि बेसिकली गाइस एथिकल कंसिडरेशन किस तरीके से होती है और बेसिकली हम इसको ये बोल सकते हैं कि कंसिडरेशन में एथिकल का क्या क्या प्रोसेस होता है। मतलब इस एक टॉपिक है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसे सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज की वीडियो में डिटेल्स देने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लास्ट में देखना ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुली गाइडेंस एंड डिटेल्स दे सकूं। तो गाइस अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अगर मेरे चैनल पर नए तो टेक विद हसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाना। तो बिना देरी के हम अपनी वीडियो को जरूर स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ एथिकल कंसिडरेशंस के रिलेटेड। एथिकल considerations are essentially about avoiding any harm to children and young people as a result of their participation in your organization's decision making। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं और इससे रिलेटेड हम आपको सम डिटेल्स देने वाले हैं और यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल रिलेटेड डिटेल्स हैं। एथिकल considerations इंट्रोडक्शन। Ethical considerations are essentially about avoiding any harm to children and young people as a result of their participation in your organization is decision making. Duty of care and minimizing harm. Individuals and organizations seeking to involve children and young people in decision making have a responsibility to minimize the risk that children and young people will be harmed physically or psychologically as a result of the participation process. There are at least two ways in which children and young people can be at risk of harm in the participation process. They can be at risk, number one, is a direct result of their experience, and a child or young person may share his personal information that causes them distress or anxiety. So number two, from the adults facilitating the process, it is therefore critical that your organization carefully consider the possible negative impacts of involving children and young people and has procedures in place to minimize risk. One example would be develop a procedure for notifying a parent, carrier or counselor if a child or young person becomes distressed as a result of their participation. It is also important to be familiar with the legal guidelines that exist to protect children and young people from harm and abuse. For example, in NSW, the working with the children check is one way. So one way that unsuitable individuals are prevented from working in roles where they have direct unsupervised contact with the children and young people. So checklist for ethical considerations for children and young people is participation. So number one, do you have a procedure in place for supporting any children and young people who experience distress or any other negative consequence as a direct result of their participation? Have all the adults working on this project been assessed for their suitability to have direct unsupervised contact with the children and young people? सो बेसिकली ये थी आज की हमारी इस रिलेटेड एथिकल कंसिडरेशंस के रिलेटेड सम डिटेल्स। उम्मीद है गाइस मेरी आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।